Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Nikhil Shukla. नमस्कार, आप सभी का मार्केट मंत्र में स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लेकर आए हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे और श्रोताओं, सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है वी रवि कुमार। RBI hikes repo rate by 35 basis points to 6.25%, raising it for the fifth consecutive time. Domestic share indices witness modest losses. Sensex finishes below the 62,500 mark. Nifty settles below 18,600 level. And Brent crude price hovers around $80 per barrel. भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की वृद्धि की। रेपो दर 6.25% हुई, लगातार 5वीं बार बढ़ोतरी। घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 62,500 अंक के नीचे और निफ्टी 18,600 अंक के स्तर से नीचे हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के आसपास हुई। और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा के बाद आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। रेपो दर अब 6.25% हो गई है। अक्टूबर से दिसंबर महीने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.5% से 6.6% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% होने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष जून से मुख्य ऋण दर में 50-50 आधार अंक की 3 बार बढ़ोतरी कर चुका है। इस मौके पर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में सुधार हो रही है और शहरी क्षेत्र में भी उपभोग बढ़ा है। The domestic share markets today witnessed modest losses. The Sensex and the Nifty both fell amid negative cues from global share markets. The BSE Sensex finished below the 62,500 mark, while the Nifty settled below 18,600 level. The Sensex declined 216 points to close at 62,411. The Nifty also slipped 82 points to end at 18,561. And to discuss the market, we have market expert Avinash Gorakshakar online with us. Avinash, welcome to Market Mantra. Good evening. Good evening. Avinash, today morning we saw an uptick in the market, but very soon, immediately after the RBI announcement, we saw the markets going down and down, especially in the last half an hour. It ended almost more than 200 points. Sensex ended more than 200 points down. What are the main reasons that you see for this fall? Yeah, I think my sense is today's policy, the markets viewed this as slightly hawkish because I think inflation continues to be the near-term concern. And I think with a weakening rupee, the government is also worried, what kind of impact it has on our, the forex outflows. But I think GDP numbers have been cut down. The RBI governor expects inflation to be around 6 to 6.4%. That's the kind of trajectory expected in FY23. At least in the very near term, inflation seems to be a concern. Market was expecting a dovish policy, some positive sentiments which did not come in. And I think that was probably the main reason the markets were disappointed, and that led to some sort of selling, which I think was quite natural because, we will probably have to wait for another 2-3 months before we could see the tailwinds, getting positive for India and possibly interest rates, moving, downside. But overall, I would believe that, the markets had already anticipated some positive news which did not materialize, and therefore there was a general profit booking because of this, kind of hawkish type of, policy which came in today morning. अविनाश, बाजार का जो आज हमने रुख देखा, कहीं ना कहीं ये काफी समय बाद ऐसा हुआ कि आरबीआई ने इधर घोषणा की रेपो दर में आधार अंक बढ़ाने की, और वहीं दूसरी तरफ मार्केट का ये असर हमने देखा, जबकि पिछली अगर हम बैठकों की बात करते हैं तो इस तरह का असर हमने नहीं देखा था। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार ये मान के चल रहा था कि गवर्नर साहब डोविश कमेंट्री देंगे। ये नहीं हो गया। वो अभी भी कॉशियस है इन्फ्लेशन को लेके, अभी भी ग्राउंड लेवल पे उनको चिंता है। हालांकि क्रूड की कीमतें गिरी है, कमोडिटी के प्राइसेस गिरे हैं। मेरे ख्याल से मार्केट्स को शायद अभी से थोड़ा सा पॉजिटिविटी करने की अपेक्षा थी, जो नहीं आई, उस कारण से पहले थोड़ी बिकवाली हो गई। और दूसरी बात, जो अभी गुजरात स्टेट इलेक्शंस है, एमसीडी में तो बीजेपी हार चुकी है जी। गुजरात इलेक्शंस का जो रिजल्ट आएगा वो थर्सडे को आएगा। उसके बाद यूएस का सीपीआई नंबर है। तो ये सारे जो इवेंट्स है वो मार्केट्स को थोड़ा सा वेट एंड वॉच में डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी क्लैरिटी और एक बार यहाँ पे कंक्लूसिव डिसीजन आता है तो उसके बाद एक प्रॉपर मार्केट डायरेक्शनल ट्रेंड लेगा। गुजरात में भी अगर मेजोरिटी से गवर्नमेंट आती है, जो एग्जिट पोल्स में दिखा है, तो मेरे ख्याल से ये बात अच्छी है। तो डेफिनेटली ये हफ्ता थोड़ा सा वेट एंड वॉच मार्केट करेगा। उसके बाद मार्केट्स विल टेक अ डायरेक्शनल ट्रेंड। बट मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी ग्लोबल फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे यूएस का इंटरेस्ट रेट, सीपीआई नंबर है, ये मार्केट्स में नंबर आएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। Avinash, if you look at the Fed is going to meet next Wednesday for their rate hike, and although they did those large 75 bips hike back to back, this time most experts are expecting a 50 bips hike there. Whatever it comes to, the final rate will be around 2022 rate for the US Fed Reserve is expected to be between 4.25 and 4.5. In India, it's currently 6.25. So the problem that comes with this is, although the commentary today that we saw, not the commentary, the statement that the RBI governor put out, it said that our forex reserves have gone up. But you will typically see that if the rates continue to be so high and there is no dovish commentary coming from the US side, if the rates continue to be so high, wouldn't there be flight of capital from India to the US? And see this in the perspective of the FPI outflow of almost $18 billion in 2022. How do you see this playing out in the next few years from a stock market perspective, next few months from a stock market perspective? No, I think in the short term, this point which you raised is very valid. But my sense is, as long as the dollar appreciates and the rupee weakens, we would be facing a little bit of pressure, because as everybody is aware, US and Europe are regions where, there is a significant amount of, pain which is going through. I think clearly over the next, say, 2 quarters, exports are going to be severely impacted, and that obviously impacts our currency. But longer term, I think, India has done a very good job in ensuring that growth continues. Most importantly, if they are able to get possibly a good domestic kind of demand, then I think that would be better, because even in the current budget, I believe that the government would obviously encourage domestic production and domestic players, because exports are going to be a kind of a weak spot, at least for the next coming quarter. So outflow would continue for some more time. But over the longer term, I think India continues to be a very promising market, and I won't be surprised that 2023 would be a good, rebound year, provided Europe and US also show some positive tailwinds, which looks possible over the next, say, 6 to 8 months. You mentioned Europe, and Europe stocks were beaten down extremely, but if you see the Euro Stoxx 50 has gained almost 19%, almost 20% this quarter, and compared that to S&P 500 in the same period is around 9% growth. Is Europe stocks in Europe a good place to buy right now? What would you say? No, I don't think Europe is a good place to buy in now, although valuations have come into pretty attractive levels. I think the key, element which is very important to look at Europe is how, properly they battle with the energy crisis. I think energy crisis has started hitting very important core sectors like power, steel, and, viability of some of the companies is now going completely haywire. So I would believe that, if for some more time we could see, a pressure on these kind of companies. And to that extent, I don't think, there are any positive triggers, at least for the European market. I think, eventually, it's going to be how long the Russia-Ukraine, war continues, because although gas consumption has gone down in Europe, the cost of production from the fossil fuel has increased significantly, and that is something which is not good for the European companies. So I think it's better to wait and watch. Europe definitely looks attractive, but not at the current level. Coming back to India, we are going to see the budget on 1st February. That's barely 60 days away, slightly less than 60 days. What are the expectations? Have all the news from the budget already been discounted in the market? Like we always say in markets, that buy the rumor and sell the news. So has all that already been discounted, or do you think the budget can actually give a fillip beyond what people are expecting?
See, I think this budget is important from the fact that this is a budget just 1 year before the general elections in 2024. So I think to a large extent, the markets are expecting that this budget, the government would try to maintain the mood, focus on key areas like infrastructure, typically manufacturing, and just like the last budget, they would obviously incentivize, companies who are basically, operating in the domestic markets. But I think clearly from the corporate tax point of view, from the middle class, individual tax point of view, there are some soaps which are expected. So I think broadly the markets would see some sort of a small pre-budget rally, starting January. But I think obviously, my sense is that at these levels, the market seems to have factored at least 50% of the, budget incentives already in the price. So not much upside expected purely from the pre-budget. But yes, like every budget, there would be excitement around it. So I think it would be better to wait and watch. But definitely being an election budget, I think some good news could possibly come in. The government would obviously like to, project their performance in this budget so that next year they could, tom-tom their achievements, to the voters. Right, Avinash. Thank you so much for joining us online on Market Mantra and sharing your views with our listeners. और इस बीच अब शेयर बाजार पे अगर नजर डालें तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली गिरावट देखी गई। दोनों प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में नकारात्मक वैश्विक रुख के चलते नरमी देखी गई। सेंसेक्स 62,500 अंक के स्तर से नीचे रहा और निफ्टी 18,600 अंक के नीचे आकर बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 62,411 पर आकर रुका। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82 अंक लुढ़ककर 18,561 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में आज बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.41% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की सुस्ती देखी गई। And we are now joined by our expert Jayanta Das. Jayanta, welcome to Market Mantra. Hi. Hi. So we were discussing with our market expert Avinash earlier about the impact of the RBI policy on the markets today. Sensex fell more than 200 points today. What do you see as the reason for the fall in the markets today? Well, obviously, it's not a little lead reaction to the basis point hike. And I believe there was a reaction in terms of in a slower than the price increase, but of the increase remaining at around 6.5% level. We are not getting this clearly, so we'll try and call you back and call you on a clearer line. Probably we can get more clarity then. So, continuing with our discussions, we are talking about the markets, Nikhil. And as you mentioned, in the broader market, at the BSE mid-cap index lost 0.41% and the small-cap index ended 0.44% down. In the Sensex pack, 9 companies posted gains while 21 logged losses. Asian Paints was the top gainer as it added 2.1%, followed by Hindustan Unilever, which surged 2%. Larsen & Toubro rose 1.4% and Axis Bank added 1.1%. On the other hand, NTPC declined 2% and Bajaj Finserv plunged 1.7%. IndusInd Bank and Sun Pharma both fell 1.6% each. In sectoral indices at the BSE, 4 sectors logged gains while 16 logged losses. FMCG sector gained 0.9%, capital goods index rose 0.8%, and industrial sector added 0.4%. And as we speak, we have Jayanta live in the studio with us. Welcome, Jayanta, once again. Thank you. So, Jayanta, we were talking about the markets. What really impacted the markets? Was it the RBI policy? Well, prima facie, obviously, to some extent, there has been an impact because, although I believe that the 35 basis points were expected, it's not that a surprise. The good thing is there has been a slowdown in the price increase, and as a result of which we have seen this 35 basis point rise instead of 50. But although there were market suggestions that it could have gone up to 50 basis points itself. So I guess it's a reaction to that particular thing. But in addition to that, let's also not forget the global slowdown and hovering clouds. So all those things are there, including job losses. और इस बीच हमारे आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल पूछेंगे। हेलो नमस्कार जी शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शरद, आज हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है और जिससे रेपो दर अब 6.25% हो गई है। और यही नहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.5% से 6.6% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को आप? मैं समझता हूँ ये काफी एक्सपेक्टेड था। जो 35 बेसिस पॉइंट हमने रेपो रेट आज देखा है, हम लोग भी जो एनालिसिस कर रहे थे, हमने इतना ही अनुमान लगाया था और आरबीआई के गवर्नर साहब ने इस बात को कबूला भी कि जो इन लाइन विद मार्केट है, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं
उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उसी के आसपास है। मुझे लग रहा है इस समय, क्योंकि अभी भी जो मुद्रास्फीति की दर 0.77 पिछली रिकॉर्डेड जो है, वो आरबीआई के टॉलरेंस लेवल से बाहर है, और ये आरबीआई के लिए बहुत एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि 6% रेंज से बाहर है, और जब तक ये नियंत्रण में नहीं आती, 6 से नीचे नहीं आती, आरबीआई को इस बात की चिंता बनी हुई है। और ये आप आज अगर जिन लोगों ने आरबीआई गवर्नर साहब की पूरा वक्तव्य सुना है, वो इस बात से सहमत होंगे उनकी भाषा में, उनके बोलने में, उनकी स्टेटमेंट्स में, जहां एक तरफ वो ये कह रहे थे कि भारत की ग्रोथ बहुत रोबस्ट है और भारत बहुत रेजिलियंस दिखा रहा है, पर ये भी सत्य है कि महंगाई की चिंता जो है उनको है, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये नीचे आए, जिस भी तरीके से नीचे आए। हालांकि मैं ये यहाँ बोलना चाहूंगा कि ये जो मुद्रास्फीति है ये ज्यादातर सप्लाई की वजह से है जी, की वजह से इतनी नहीं है। भारत की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब आप आरबीआई की दरें बढ़ाते हैं एज ए मॉनिटरी टूल, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए, तो उसमें उसका आंशिक असर होता है। इसीलिए हमने देखा कि आप देखिए कि 5.9 और आज 6.25% पर आ गया है। तो इतना बढ़ने के बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी भी मुद्रास्फीति उतना नियंत्रण में नहीं आई है। नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन हो जी, आप इतनी रेपो रेट बढ़ाएं तो वो इमीडिएट इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर। और आज आरबीआई को बढ़ाते हुए काफी महीने हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अभी बढ़ाई है। और ये भी हमारे श्रोताओं को एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो उसको हम लैग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी लैंग्वेज में। लैग का मतलब होता है कि ये नहीं कि आज हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और आपको कल इन्फ्लेशन नीचे आती दिख जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसका इफेक्ट 6 महीने से 9 महीने में दिखाई देता है। तो आरबीआई लगातार हर 2 महीने में हम जानते हैं कि एमपीसी की मीटिंग होती है और लगातार आरबीआई बढ़ा रहा है। तो आरबीआई इस बात को जानता है कि हम जो रेट बढ़ाते हैं उसका अगले दिन असर नहीं होने वाला है, उसका असर आपको, इसीलिए आपने जो लोगों ने गवर्नर साहब का वक्तव्य और ध्यान से सुना, उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने ये बोला कि 2024 तक हम इसको 5% के आसपास ले आएंगे। तो ये साफ साफ इस बात को बतलाता है कि जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं रेपो रेट के फ्रंट पर, उनका कोई मैजिकल इफेक्ट नहीं है। आप धीरे धीरे करके ही ये नीचे आएगा। तो ये मुझे लग रहा है लोग जनरली ये समझते हैं कि भाई आज रेट बढ़ाया तो कल से अगले महीने की जी शरद, बिल्कुल सही, आपने सही आकलन लगाया, सही बात कही आपने। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Well, let's talk about the story that we've already discussed. The Reserve Bank of India, RBI, today hiked the repo rate by 35 basis points to 6.25%, raising it for the 5th consecutive time. The key interest rate has been hiked a total of 190 basis points since May this year, by 50 basis points thrice since June, and once by 40 basis points during an off-cycle meet in May. The central bank increased the rate after inflation continued to stay above its tolerance band. Governor Shaktikanta Das, delivering the Monetary Policy Committee announcement, said that the real GDP forecast for the current fiscal had been lowered to 6.8%, which is 0.1% lower than the revised estimates released by the World Bank yesterday. Jayanta, how do you see this? Just yesterday, World Bank said from 6.5 to 6.9, upped the forecast, and today RBI is downgrading the forecast from 7 to 6.8. The economists don't match. I guess the arrival obviously have been at while the broader data sets have been the same, but these are all simulative studies based on innumerable factors put in, and obviously it's not a case of studies going haywire. It's a case of a small mismatch. So I wouldn't lose sleep if there is even 25 basis point difference in terms of projections. What we need to understand is we are doing a sub-7 level at this point of time, ending this fiscal. And we are doing this in a scenario where we have a global recession, really coming up, not looming now, it's more a reality than just looming. Maybe 2 months ago we would have said it looming. That's the first part. And the second part is a continued Ukraine-Russia war, which has disrupted a lot of, other collateral factors, which we just can't discount. And why India only? The world has been affected because of that. While we are settled down to the fact that it's a continuing ongoing war and there's nothing much we can do, but the disruptions in supply side factors globally has created these impacts, including the gas price impact, which Europe is right now going through as it stares at a very cold winter ahead. So keeping these factors in view, obviously the 10 basis point, I guess, difference is something which we can, at this point of time, overlook. But the important underlying factor is, as the RBI governor said today, that despite all these, the economy is still above 6.5% levels in terms of growth factor. That augurs very well. If you take the clock back 20 years,
I mean, 6% plus growth would have been really hailed as one of the great achievements. It's coming off a low base now and yeah, so because also when we compare, let's say the China years having 2%, they have a base of 13 trillion, we have a base of 2.7 trillion. Yeah. So all those things are there surely. There's no ignoring that fact. But nevertheless, as I said, and even the stock markets have been buoyant enough. If you see for the last 4 weeks, 5 weeks, and 6 weeks, we didn't have a very faltering, discomforting. Despite almost $18 that's what I said. billion taken away. So that's something which a lot of observers, researchers of the stock market would like to actually go into details of how can they get a huge outflow. 40% of the free float stock. Absolutely. Foreign investors have 40%. And they took away $18 billion. Exactly. Yet we have this great year. So how is this happening? And I think we can take some pride in the fact that the resilience is much domestic used words. markets, the retail investor. Much used words, but then these things have come in, and that's where the strength of an economy gets continuously persistent in terms of overcoming these sorts of challenges. I mean, imagine 10 years ago if there was even $1 billion pullout, stock markets would have crashed, and in 2008 we had a $13 billion pullout from, and you know what happened in 2008. Exactly. So this is an $18 billion pullout, and the market is just shooting Absolutely. up. So these are factors, and see how the banks have been overwhelming. I mean, most of the banks in the PSUs are 52-week high and things like that. And this speaks of how we are looking forward to. But nevertheless, let's not dismiss the fact that there will be global slowdown which is happening, which no longer is looming. Which no longer is looming. It's here. Yeah. Okay. So that will impinge upon the market somewhere down the line. जयंता, आज की बातों पर अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो हमने ये देखा कि गवर्नर साहब ने ये बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर रहा, सर्विस सेक्टर में भी बढ़त है, स्टील की काफी मांग बढ़ी है, गाड़ियों की बिक्री भी तेजी से हो रही है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है इसमें भी मांग काफी बढ़ चुकी है। तो आरबीआई कहीं ना कहीं घरेलू बाजार से भी बहुत सारी उम्मीदें लगा करके बैठा है कि जो महंगाई उस पर काबू पाने में इसमें कहीं ना कहीं बहुत हमें मदद मिलने वाली है। बिल्कुल, और जैसे निखिल अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा में कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अब ये जरूर है कि विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश को ऊपर स्थिति करके काफी हद तक इस देश को आगे बढ़ना है, बढ़ भी रहे, लेकिन साथ में घरेलू बाजार, घरेलू इंडस्ट्री, काफी सारे जो सरकार ने अपना अलग अलग सब पॉलिसीज निकाले हैं, वोकल फॉर लोकल, उस तरह का सब जो भी स्कीम सब बताए, जहां पे कहीं ना कहीं एक कोशिश किया जा रहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करते हुए चीजें यहाँ पर बिके। अब आपने चार पाया वाहन की बात करें, ईवी रेवोल्यूशन अगर आप देखें, इंडिया की ईवी रेवोल्यूशन इज बीइंग लेड बाय टाटाज एंड महिंद्रास टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बिल्कुल, टाटाज आई थिंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स। तो इस तरह का घरेलू बाजार, घरेलू कंपनी का जो प्रदर्शन रहा है, और ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जाके ये 1 साल 2 साल का प्रदर्शन नहीं है, ये लंबा दौर चलने वाले है। और इसका साथ साथ स्टार्टअप इंडिया का एक जो दौरान चला है, जहां पे आज का तारीख में करीबन 80,000 स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड है, और कहीं ना कहीं ये लोग भी, आप भूल ना जाए, ये 80,000 कंपनी का 2 लोग भी हायर करते हैं अपना उसमें, तो आपका 2 लाख के करीब पर ईयर नया जॉब्स कहीं ना कहीं आ रहा है। बिल्कुल, अगर आप रेवेन्यू की तरफ कंट्रीब्यूशन का बात करें वो तो अलग है ही, जहां पे अब देखें तो ये सारी चीजें जो नींव होता है देश का, उसमें मजबूती में बहुत ज्यादा हक रखता है। और मेरे को अच्छा लगा आपने कृषि क्षेत्र के बारे में बात किया, शायद आरबीआई गवर्नर साहब ने भी, हालांकि उन्होंने स्पीच पूरा विस्तृत रूप से मैं सुना नहीं, लेकिन कहां पर उन्होंने भी उल्लेख किया है। और ये इस दौरान जब हम इंडस्ट्री का बात करते हैं, सॉफ्टवेयर, टेक, स्टार्टअप का बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ के आते हैं, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उसका एक अलग से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है महत्वपूर्ण है। आज हम लोग की तरफ जो एक कंप्लीटली डिपेंडेंट देश, जहां पे कोई भी अनाज हो, कोई भी फूड ग्रेन हो, शुगर का देखिए वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ब्राजील का साथ साथ, तो इस तरह का जो माइलस्टोन्स हम अचीव किए हैं प्रोडक्शन का रूप से, उत्पादन का रूप से, मैं मानता हूं वो कहीं ना कहीं आज का तारीख में देश को ये सोचना नहीं पड़ रहा है कि भाई बफर स्टॉक में अगर 10 साल पहले भी बात करें या 15 साल पहले बात करें, हमेशा अखबार में एक खबर आता था जब भी मानसून खराब होता था कि बफर स्टॉक कितना महीनों तक है। अब आप गूगल सर्च भी करेंगे तो शायद बफर स्टॉक का अलग से कोई खबर इस तरह का नहीं मिलेगा, ये जरूर मिलेगा कि बफर स्टॉक कितना चल रहा है वगैरह। In the RBI governor statement, he mentioned that the Rabi sowing has been better than expected, exactly. And that would be one of the reasons why he expects inflation to moderate. तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है, जो हम लगातार जब हम इस तरह का डिस्कशंस करते हैं न्यूज वगैरह। आपने फूड ग्रेन्स की बात की, इसमें हम मिलेट्स को अगर जोड़ करके देखें तो मिलेट्स पर भी अभी काफी काम हो रहा है। इससे भी सरकार को कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मिलेट्स का जो अगले साल पूरा 1 वर्ष उसको दिया जा रहा है, उससे भी बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। देखिए, एक वो जमाना है जब वहां पे अब गेहूं हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं विदेशी बाजारों में,
और अमेरिका भी आके गेहूं कहीं ना कहीं खरीदने का भी बात कर रहे थे। ये सारे चीजें जो है एक न्यू स्ट्रक्चर के दौरान मैं मानता हूं कि एक नया ओवरऑल जो कहते हैं हम शुरुआत से एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है और साथ में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है जी, तो साथ में डोमेस्टिक प्लेयर्स को अलग से फोकस भी देना है। और जीएसटी का भी अगर आप देखें, जीएसटी कलेक्शन भी पिछले 2 महीने से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, काफी अच्छा स्ट्रांग कलेक्शन है और ये बिजी सीजन का शुरुआत है। मैं मानता हूं दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार इस तरह का मोमेंटम बने रहेंगे। एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो वैश्विक शेयर बाजारों में नुकसान के रुख के चलते आज एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। फेडरल रिजर्व मॉनेटरी के मौजूदा हालातों के बीच मंदी की आशंकाओं के कारण बाजार के रुख में यह बदलाव आया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक दोनों ही 0.4% नीचे आ गए। जापान का निक्केई सूचकांक 0.7% की गिरावट में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% लुढ़क गया। हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक 3.2% की सुस्ती में रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन का FTSE 100 0.2% के नुकसान में चल रहा था। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डेक्स 0.3% नीचे आकर कारोबार कर रहे थे। If you look at the U.S. market, the Wall Street ended lower yesterday with the S&P 500 extending its losing streak to 4 sessions amid investors' fear over Federal Reserve rate hikes and further talk of a looming recession, which we will now amend to talk of a recession. The Dow Jones Industrial Average declined 1%, the S&P 500 plunged 1.4%, and the Nasdaq Composite Index tumbled 2%. The stock futures, Jayanta, were down today as well. I was just looking at the latest data. And sometimes good news becomes bad news because we saw the labor report and the jobs report, the wages report coming very strongly in the US, and that makes the Fed Reserve even more worried that if people have money to spend, that will increase inflation. Exactly. They really fear inflation. Then should we go back to a really hawkish? So will 50 become 75? Why they even RBI governor has also used the word Arjuna's, some phrase he has used, taking a cue from there. Focused on controlling inflation, like the Arjuna was focused on the fish's eye. Exactly, fish's eye. So I think. Obviously, and that's what the main fear is, because somewhere down the line, post-COVID, inflation with all the helicopter money which has come in has driven, the demand to such an extent with spiraling prices, spiraling costs. But as I've said around 3-4 weeks ago in one of the programs here, the fear of, the IT industry, which has started now as a domino effect in terms of people losing jobs there, is something to be really scared of, because I know of a lot of Indians who have started now coming back to India in terms of planning for the next 6 to 9 months, whether they'd like to shift here for the next 6-9 months or be there and look for a job further. So these are some disturbing news on the horizon in that sense. रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 48 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में गिरावट के साथ 105.49 पर था। Oil prices were flat in intraday trade with Brent crude falling to near its lowest this year. The crude prices fell, pressured by concern about recession and easing fear that a Western cap on Russian oil prices would significantly curb supply. Brent crude was trading at $79.40 per barrel, while WTI crude prices were at $74.35 per barrel. Very briefly, this price cap of $60, is it working? Is it going to have any impact? Let's see. I mean, I'm quite, as I said, the oil industry always confuses me to a great extent. And, it's just like a wild lottery, guessing, in terms of where the prices will head or not. But the good thing is the price is softening. So I think for Indian domestic sector also, it's going to augur well. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना बिना किसी खास उतार चढ़ाव के 53,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 145 रुपए मजबूत होकर 65,600 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना वृद्धि के साथ $1,785.80 प्रति औंस पर था, जबकि चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $22.50 प्रति औंस पर थी। Very briefly, are you more bullish about gold or about silver? Very briefly. Gold, to some extent, greatly. I mean, I have been fan of gold for the last 2 years, despite the meltdown it saw, and it's once again coming back, and I believe it's something that will stay. Thank you, Jayanto. Before we close, a reminder of the headlines that we covered in this edition of Market Mantra. RBI hikes repo rate by 35 basis points to 6.25%, raising it for the 5th consecutive time. Domestic share indices witness modest losses. Sensex finishes below the 62,500 mark. Nifty settles below the 18,600 level. And Brent crude price hovers around $80 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.
Market Mantra.